Are you wondering what is to lift weights, to do pull-ups, push-ups, walk, exercise, run in Urdu? Let's learn about it today. Hello everyone, I hope you're doing well. My name is Sara and on this channel I teach Urdu as a second language. I teach Urdu privately as well on these websites. If you're learning Urdu and Hindi, you can benefit from this channel because Urdu and Hindi is quite similar when it comes to grammar and colloquial language. You know what we're going to learn today? We're going to learn about exercise, physical activity, running, walking, and verbs related to it. I'm a very active person and I do a lot of physical activities. So this is like my favorite topic ever. I do a lot of physical activities like hiking, I like to run, I like to swim, I like rock climbing. मुझे सारे काम बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा ये काम करती हूँ. हफ्ते में एक दिन मैं तैरने जाती हूँ, एक दिन दौड़ने जाती हूँ, एक दिन पहाड़ों पे चढ़ने जाती हूँ, एक दिन पैदल चलती हूँ या फिर साइकिलिंग करती हूँ. पहले जिम जाना पसंद करती थी मगर आजकल मैं ज़्यादातर बाहर कुदरती माहौल में रहना पसंद करती हूँ. सारा, सना, सारा कैसा है? तो आजकल मैं जिम नहीं जा रही मगर मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सारे तालिब इल्म और आप लोग जिम जाना पसंद करते हैं. तो आज की वीडियो हमारी इस मौजू के बारे में है. तो चलें शुरू करते हैं. So the first one is to lift weights. To lift is uthana and weight is wazan. Singular is wazan and plural is wazan as well. So this is wazan uthana. Wazan uthana. मैं 10 किलो वज़न उठाती हूँ. मैं 10 किलो वज़न उठाती हूँ. I lift 10 kgs. मैं भारी वज़न उठाता हूँ. मैं भारी वज़न उठाता हूँ. I lift heavy weights. भारी is heavy. मैं भारी वज़न उठाता हूँ. Although when it comes to using this verb in the gym, you just say dumbbells उठाना. Dumbbells उठाना. 8 kg के dumbbells उठाती हूँ. मैं 8 kg के dumbbells उठाती हूँ. To do sets is called मैं 3 सेट बारबेल प्रेस के लगाती हूँ और मैं 3 सेट्स बारबेल प्रेस के लगाता हूँ. So लगाना is to do. So I do 3 sets of barbell press. Instead of लगाना, you can also use करना. मैं 3 sets barbell press के करती हूँ और मैं 3 sets barbell press के करता हूँ. K is indicating that you're doing multiple barbell presses. To do superset is मैं superset लगाता हूँ. मैं superset लगाता हूँ or you can also say मैं superset करता हूँ. मैं lat pull down के 3 sets लगाता हूँ. को मैं 12 दफ़ा दोहराता हूँ. दोहराना is repetitions. मैं इसको 12 दफ़ा दोहराता हूँ. Instead of दोहराना, you can also say reps करना. मैं 12 दफ़ा इसके reps करता हूँ. मैं स्क्वाट्स के 3 सेट्स लगाती हूँ. खींचना is to pull. खींचना. When you're pulling the bar, you can say bars खींचो. But mostly in the gym, you will just use the English terminologies like lat pull down, squat करना. Or when you're pulling ropes, you can say रस्सी खींचना. Skip is रस्सी कूदना. रस्सी कूदना. मैं कोविड में घर में रस्सी कूदती थी.
मैं कोविड में घर में रस्सी कूदती थी. कोविड में मीन्स ड्यूरिंग कोविड, घर में at home, and रस्सी कूदना is to skip. So I used to skip rope during COVID. The third one is muscles banana या पट्ठे बनाना. So normally nowadays I've heard people just say muscle banana. मुझे मसल बनाने का शौक है. I like to make muscles. मुझे मसल्स बनाने का शौक है. वर्जिश करना is to exercise. वर्जिश करना. मैं हर रोज़ कम से कम 1 घंटे वर्जिश करता हूँ. मैं हर रोज़ कम से कम 1 घंटे वर्जिश करता हूँ. मैं हर रोज़ मीन्स एवरी डे. कम से कम मीन्स एट लीस्ट. कम से कम 1 घंटे 1 hour वर्जिश करता हूँ. Do exercise. You can also say exercise करना as well. My goal is to teach Urdu, which is considered normal and used every day. दौड़ना is to run. दौड़ना. मैं ट्रेडमिल पे हर रोज़ आधा घंटा दौड़ती हूँ. मैं ट्रेडमिल पे हर रोज़ आधा घंटा दौड़ती हूँ. आधा घंटा means half an hour. This is a present simple tense because this is talking about routine. पैदल चलना is to walk. पैदल चलना. You can also say walk करना as well. Walk. मैंने आज 2 घंटे walk की. मैंने आज 2 घंटे walk की. I've walked for 2 hours. मैंने आज 2 घंटे walk की. Or you can say मैं आज 2 घंटे पैदल चली. Walk करना is a transitive verb, whereas पैदल चलना is an intransitive verb. पसीना आना is to sweat. आजकल बहुत हब्स है तो मुझे बहुत पसीना आता है. हब्स means humidity. आजकल बहुत हब्स है तो मुझे बहुत पसीना आता है. So I sweat a lot. पसीना आना, पसीना आता है. With yoga and pilates, you can just put करना after it. So yoga करना, pilates करना. Swimming is तैरना. Another verb is तैराकी करना. तैराकी करना, but तैरना is more common. You can also say swimming करना. मुझे swimming करना पसंद है. मुझे तैरना पसंद है. मुझे तैराकी करना पसंद है. Are you energized and ready to go to the gym today? I am. मुझे बहुत दिल चाह रहा है मैं हाइक करने जाऊँ इसके बाद, मगर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर. It's like 43 degree centigrade. तो मैं नहीं जा सकती, मगर मैं शायद शाम को जाऊँगी. Hope that you learned a lot from this video. If you have, please subscribe to this channel. It will motivate me to make more videos like this. Have a great day and I'll see you later. Goodbye.